so welcome to the Cam Master Show. This is my first podcast episode. Uh, I'm doing this with my dad. तो पापा सबसे जो पहला एपिसोड है मेरा पॉडकास्ट का I'm starting with you. So सबसे पहले मुझे बताएंगे what do you think about what the podcast format is like? आपने देखी है podcast आपको idea है कि what do we do in podcasts and हाँ मैंने काफी लोगों की देखी है पॉडकास्ट. मेरा आइडिया है कि दिस इज अ गुड फॉर्मेट. इसमें इनफॉर्मल पीपल जनरली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जो उनके अंदर है, जो उनके ओपिनियंस हैं, जो उनके व्यूज हैं बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस और देयर नॉलेज ऑफ सर्टेन फील्ड्स, और किस प्रोफेशन की बैकग्राउंड से वो आ रहे हैं. मतलब नॉर्मली तो ये एक बड़ा मीनिंगफुल एक डायलॉग हो जाता है. The podcasts are normally for इसमें information भी बड़ी होती है. Information होती है वो you have people because people have background knowledge. So they talk about those things. So they through that knowledge they reflect their opinions and views. तो वो एक अच्छा एक combination बन जाता है इंसान का. अच्छा, so मुझे अब ये बताएं कि the topic that I'm going to discuss with you is कि you are a very ardent follower of the Game of Thrones. Yes. And you watch the show whenever it comes out. I really like costume movies. मतलब वो तो आपका हमेशा से शौक था ना. You always wanted to watch. You always liked watching costume movies. मतलब वो नहीं होती historical epic movies अंदर. So you watched Game of Thrones. मुझे ये बताएं कि आजकल जो do you think there are many things which are happening in the show obviously related to उसमें जो भी intrigue और mystery और controversies और obviously the battles and everything. मुझे बताएं कि do you think कि I read an article somewhere कि इसमें there's the underlying message that the author is giving about the climate change. आपको feel होता है कि उसमें कोई element उस तरह का इस्तेमाल किया हुआ है उन्होंने show में, like there is a hint of climate change promotion that thematically trying to give it. My view will be slightly different. So, if you are feeling कि certainly वो ये message देना चाह रहे हैं through the different episodes कि climate change is coming and all that. Well, obviously it's not just climate change. But it's just a theory. But it's a subtle hint towards that. I really don't go with this view. मेरा अपना opinion है कि ये different historical happenings, different historical truths, उनसे ये एक रेसिपी बिल्ड की गई है, ठीक है, to give us a very different message than I would say to constrain it just for the climate change. It's not constrained to the climate change, it's constrained to a lot of things which is happening presently, which has happened in the past. Political struggles, international power struggles, dynamics, power struggles, nations, ups and downs, civilizations going up and down. और start इन्होंने जो wall का एक बड़ा till now was a big kind of a thematically they were focusing on the wall, right? ये जो wall का concept इन्होंने Gog and Magog से लिए. Well, they're different historical things. Historically हमारा जो है यूज माजूज है, उनके आगे दीवार है और eventually दीवार गिरेगी and they'll come out and they'll, क्योंकि ये तो बाइबल में भी है. और फिर वो फितना फैलाएंगे दुनिया में. So you think the author has so that's kind of a initially the starting was taken from there, right? और अब आ जाता है इसमें aspect of current aspect of a tug of war, a hybrid war, a proxy wars that we are going through. It's all for Game of Thrones in a way, right? इस तरह का एक और भी शो So इन्होंने president को ना depict किया है in 9 kingdoms. Yeah, but it's basically so 9 kingdoms are fighting each other to power struggle and to gain supremacy over the others. Yeah, but obviously there's जैसे कहते हैं there's a link to what's happening now and eventually अब जो final which I sort of can visualize in a way कि अब जो अब ये finally वो queen का नाम है Cersei. अब उसके against जब ये इकट्ठे होके war करेंगे,
So Do you think वैसे अभी मुझे बताएं जो लास्ट एपिसोड हमने जो देखा है उसमें ये जो बैटर ऑफ विंटरफेल जो हुआ है जिसमें ना वो जो थे वाइट वॉकर्स थे फिर आपके नाइट किंग था एंड देयर वाज अ ह्यूज वॉर पूरा एक वो बैटल हुआ एंड एवरीथिंग मुझे एक तो उस तरह से बताएं कि डू यू थिंक दैट दैट एपिसोड वाज गुड इन टर्म्स ऑफ the action or the battle sequence or the storyline क्योंकि इसमें बड़े लोगों का opinion like a lot of people were divided about the reviews of the episode they were like यार ये अब जो Game of Thrones आ रहा है ना ये इसमें they're either trying to finish the show off quickly या फिर they're not putting much thought into what they're showing now because अब वो बड़ा एक तो fast track तो हुआ है show like a lot of the story sequences are a lot faster now काफी ज्यादा चीजें एक दस्ती निकलती जा रही हैं आपका वो एगॉन टारगेरियन का उसको बता दिया फ्लान का और कुछ होना तो था वो मगर ये बड़ा बॉलीवुड-एस्क टाइप एपिसोड था जिसमें उसमें वो जिसे कहते हैं ना कि वो आग लगा दी थी उसने मिलिसांड्रे ने और वो सारे वो दोथराकी गए और ये वो वगैरह मतलब पीपल वर लाइक ऑफ द ओपिनियन कि ये जो बैटल था ना थोड़ा सा उन्होंने एक जो नंबर 1 कंप्लेन थी ना कि दे वर लाइक यार इतना डार्क उन्होंने शूट किया है व्हिच आई डोंट एग्री विद इट क्योंकि इसकी वजह ये है कि आई फील कि वो था ही द लॉन्ग नाइट या इस तरह का वो बैटल का एक था एलिमेंट उसमें सो आई फील कि वो डार्कनेस का जो एलिमेंट है ना इट्स सपोज्ड टू बी देयर ताकि वो एक क्रीपिंग डार्कनेस फियर एंड ब्लडनेस हाँ एक वो जान के आपको सफोकेटिंग फीलिंग ऑफ अ बैटल वो दें थोड़ी सी बट आई डोंट नो इफ दैट्स हाउ पीपल व्यू इट आपको क्या लगता है मेरा अपना ओपिनियन है कि since they were building up and opening up too many ends, right? Different short within a story, they were having a short stories of different characters. अब इन्होंने अगर उनको 6 साल I don't know how many episodes they're going to have. अभी I think 3 आ गए ना तो I'm guessing there's 6 episode मेरे ख्याल में 6-7 हैं पता नहीं. So the 3 so altogether 6 or 7 episode में they want to conclude. तो अब इनको प्रॉब्लम ये आ रहा था कि too many ends were there. Yeah. तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने बड़ा abrupt उसको ना कुछ characters को eliminate करवाया one after the another in this which was rather too abrupt. लेकिन मतलब and secondly लेकिन Game of Thrones में तो they try to like वो आपको shock value देते हैं उस चीज की. I know they kill off characters like वो shock value तो end की थी ना कि जिसको finally जिस लड़की ने नाइट किंग को मारा है आर्या स्टार्क हाँ that was a shock element right secondly that people weren't expecting secondly that woman the witch in a way who came and you know एकदम वो swords को वो आपने वो सीन देखा था जिसमें वो जो रेड विच है उसको कहते हैं वो उसको आके आर्या को जो एक सीन में कहती है कि you're supposed to kill brown eyes and black eyes and blue eyes तो blue eyes जब कहती है और वो एकदम जाती है उसको एकदम like वो नहीं होता she feels के अच्छा that's what she's saying कि you're the one who's supposed to लेकिन एक और चीज थी जो ब्रांड स्टार्ट इन्होंने ना कुछ कैरेक्टर्स को खुद भी एलिमिनेट किया है हाँ वो तो करना और जिसा रेड विच है उसको इन्होंने यूज किया है टू फिनिश ऑफ दैट होल रेस डॉथराकी वाली एग्जैक्टली हाँ क्योंकि she is the one who puts them on fire up their use one character against a lot of other characters जिनको इन्होंने wind up करवाना था सीरियल में से right so this was a series in which a lot of characters were sort of winded up vanished from the scene और अब जो final battle के लिए rest of the 3 episode will be concentrating on intrigues between the वो अब वो ज़्यादा political intrigues और personal storylines and alliances and enmities of other kingdoms and this and that अब वो build करा के ये end पे लेके जाएंगे मुझे भी लग रहा है कि there was also this वो जो सर्सी क्योंकि नहीं आई थी कोई भी she didn't have any by the way let me also give one more perception which is purely mine जो कि maybe you agree with that or not in a way these last 6 episodes मेरे ख्याल से वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी subtly predict कर रही हैं अच्छा there will be a third world war right
क्योंकि देखो ना अब एक ही किंगडम रह गया जिसके अगेंस्ट ये सारे अलायंसेस क्रिएट करके तो उसके they're going for the main kill, Right. kill shot के लिए जा रहे हैं. So एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का भी एलिमेंट आ गया. But they're trying to showcase a platform where now there's going to be either a singular enemy, a singular state which has all the power. Yeah. Exactly. वो एक उस तरह का भी एक जरा उन्होंने. And the smaller powers are putting either they're combining together. Combining. And but एक monopolized power को exactly. topple करने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah, I think there's a lot of that. मुझे एक और भी था कि मुझे एक जो थ्योरी आपसे हमने पूछी थी कि आपको पता है वो जो ब्रांड स्टार्क का जो सीन था वे जो इससे पिछले एपिसोड में जो वो कहता है कि मुझे एज बेट यूज करो फॉर द नाइट किंग एंड सिंस ही इज द थ्री आइड रेवन और आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू लेकिन मुझे फील होता है कि ही ऑब्वियसली न्यू कि उसको बेट तो कर ही रहा था वो मगर ये था कि ही आल्सो न्यू कि वन ऑफ हिज स्किन व्हिच इज आर्या या जो भी probably he knew कि मैं उसको जब लेके आऊंगा तो she or somebody will be the one to kill the Night King और most probably he knew कि आर्या ने उसको मारना है so that's why he baited himself out. थियोन जो था उसको उसने एंड तक रखा उसको भी रिडेम्पशन वाला एक दे दिया क्योंकि थियोन की बड़ी अजीब सी स्टोरी लाइन रही है ना थ्रू कि वो he also कुछ पिछले सीजन में he came after Bran Stark और वो याद है वो जो विंटरफेल पे उसने रेड मारा था इनका अपने जो उसकी थी जो अपने तो वो एक उसका रिडेम्पशन वाला भी उन्होंने सीन थ्रो कर दिया कि तू भी इजी है और मतलब तू जा कि तू वो कहता है कि यू आर गुड मैन और वो बेसिकली अल्टीमेट रिडेम्पशन उसको दे के देखा बस इजी है अब तू जा मतलब जो भी है और वो पे करता है मार देता है उसको बट ही आल्सो न्यू कि आई थिंक ही न्यू कि हां क्योंकि देखो ना वो उसको तो ये he can see the past and he can see the he's in future. three different timelines exactly three different time zones में वो operate कर रहा है so that was obvious अच्छा मुझे probably उसमें एक और भी power है to suggest to other character to intervene maybe वो लड़की जब भागती है इसकी तरफ जब वो red witch उसको बताती है कि you will be killing blue eyes and brown eyes and this and that. So she rushes immediately and gets the message, right? So maybe लेकिन उसको directly Bran से नहीं आता मैसेज मेरे exactly. लेकिन but he knows कि she will be the one जिसको ultimately I know but maybe telepathically he is sort of communicating also with other minds. But telepathic मुझे नहीं पता मगर ये है कि I do feel कि he knows कि क्या सीन था क्योंकि वो वाला अब मुझे एक और भी बड़ी अजीब सी थ्योरी ऑनलाइन में पढ़ रहा था कि there's a slight chance कि the Night King isn't dead. maybe अब मुझे नहीं पता उसका क्या स्टोरी आर्क में किस तरह डेड इसलिए हुआ ना कि it just sort of vanished. हाँ लेकिन मुझे वैसे ही मैं पढ़ रहा था obviously these are all theories मतलब वो we don't know अब तो भी आने वाले भी मंडे को एपिसोड आएगा तो we'll know कि क्या unless के जैसा वो बाकी डेड्स को एकदम फिर से रिवाइव करता है हाँ मतलब I don't know उस टाइप का कोई उसमें अगर पावर्स हैं या नहीं है but I doubt it now I think it's more now a fight they have eliminated a lot of characters and Night King was one of the main characters उसको भी eliminate कर दिया so I don't think they're going to bring him back because it's like dragging the whole story and they won't be able to end it in just 6 more episodes then they have to go on more intrigues and all that into that so मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको फिर से रिवाइव करेंगे हाँ नहीं probably not because they are in the winding stage अभी कल आ रहा है एपिसोड मंडे को मंडे डेट क्या है आइडिया कोई I think 6th alright so 6th को probably I mean what's your prediction of what's going to happen in the next episode like what do you think अब जो है ये जो alliances हैं you think the further people are going to join Winterfell because now they've won the battle against the dead or अब एक direct threat है to the Seven Kingdoms and also the fact कि जो Daenerys है उसको पता है कि Aegon Targaryen है Jon Snow which means he's the rightful male heir basically so that's a direct threat to her claim to the throne do you think अब उसकी भी dissension एक आएगी उसकी भी एक there's going to be intrigue between them as well या वो easy करा देंगे दूसरे को yes Jon Snow basically कहेगा मुझे throne नहीं चाहिए आप मतलब you can take the throne बस ये है कि we need to remove Cersei
I think that queen, I think she'll be creating a lot of deceptions, a lot of intrigues among the kingdoms that are uniting against her. So अब जो coming episodes होंगी दो या तीन, वो it will be all about intrigues of thrones हाँ मतलब अब against वो each other. एक तो मुझे लग रहा है Finally they overcome all those obstacles. I'm sure there's another battle which और will happen. सारा वो intrigues को मगर they'll- balance out कर आके then they'll come up with a final They'll drag it out with- force against her. हाँ। So that will be the end. अब वो ज़्यादा the next episodes will more or less focus on how they are now politically their alliance wise किस तरह से काम Exactly. करेंगे and what kind of other stuff she throws at them. और वो वाला scene है. Because she's going to throw in different. मतलब she's going to use some people as well. Use some people. वो जो she'll be growing a lot of intrigue. क्योंकि वो कहती है ना कि she sends that mercenary वाला जो boy होता है. हाँ, उसको भेजती है अपने उसके भाइयों को मार दो अपने दोनों. Exactly. In case they win the war and against the White King. So exactly, this is exactly what she is going to do, and it is expected even in present time. जब आप international relations को study करते हो, so that's exactly what is going on. Countries are playing. Well, you shut each other down. Powers of the times play smaller countries against each other, trying to create their influence. Political intrigue भी यही होती है. और economical and political gains को अपने consolidate करने के लिए. This has exactly been happening after the Second World War. अच्छा मुझे जो सबसे जो इंटरेस्टिंग अब चीज़ लगती है ना कि वो ये है कि आई फील के अगला जो एपिसोड है ना उसमें आई फील के बहुत कोई नेक्स्ट लेवल क्रिटिकल कैरेक्टर है हमारा जो मरने वाला है कोई एंड आई फील के टिरियन को मरवा देंगे. टिरियन को इसलिए मतलब मुझे फील हो रहा है कि टिरियन को मरवा देंगे क्योंकि टिरियन जो है ना अब एक तो सर्सी की तरफ से भी उसका सीन ऑफ है और मुझे लग रहा है डेनेरिस साइड से भी इसका सीन ऑफ हो जाएगा. और मोस्ट देयर कुड बी अ चांस कि सांसा को भी मरवा देंगे. आई फील कि अब नेक्स्ट एपिसोड में दे हैव टू डू समथिंग ऑफ सच अ शॉक वैल्यू कि लोग एकदम पागल हो जाएंगे. वो ये क्या हो गया. they have to keep watching till the end. Now they have to like एक shock value throw करेंगे and बड़े critical characters. I think every episode will have one shock value, right? You can't have 3 or 4 shock values. जोड़ा को तो मरवा दिया. In just one single episode जिसमें इसमें हुआ है. क्योंकि इसमें तो 5-6 characters जो eliminate हुए हैं ना. So इतनी speed से they can't go on eliminating the characters. लेकिन की वैसी हिस्ट्री main characters एक ही एपिसोड में ना बड़े 2-4 हेवी कैरेक्टर्स ही उड़ा देते होते हैं वैसे. I don't know मतलब मुझे लग रहा है कि वो to keep the hype alive ना they might kill off some very critical characters next episode. एक आधा तो होगा. Now अब मेरा अपना ख्याल है कि सेल्सा जो है ना she will play quite a role in a way कि she will now intrigue against. मुझे लग रहा है कि सांसा is now becoming a very strong figure. Very strong figure. And she has some power. To capture the whole power, she will play the power game. क्योंकि अब तो मतलब I feel कि उसको they'll use her in a way कि she becomes a formidable force now. And she has a lot of decision making power in terms of a lot of things. और वहाँ पे फिर आपका वो डिनेरिस वाला इंट्रीग और वो सारी चीजें they'll try to mix that up. But I don't know, like anything can happen. Exactly. I'm sure. Exactly. And you know, it's just tomorrow, so we have to wait and see what's coming. Yeah. But the guess is that there are going to be 1 or 2 shocks. Yeah. And now the rest of the serial will be all intrigues among tribes, among nations. You see, or ultimately फिर वो proper alliances जब बन जाएंगी, then they'll finally. अच्छा, I'll just now wrap up the podcast. मुझे ये बताएं सबसे पहले कि before we wrap it up, उसमें क्या कहते हैं शायद अभी ना बंद कर. By the way, Shahryar is my little brother. He's behind the scenes and he's recording this thing.
मेरा production assistant Sharia है इसमें. So I'll be bringing him also into my next podcast. Yes. I'm starting off with the closest people जो मेरे साथ हैं आसपास, तो उनके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ. But it's gonna hopefully और भी grow करेगी. Anyway, तो मैं ये कह रहा था कि yeah, so I'm gonna wrap up the podcast. मुझे बताएंगे आपने what do you feel like do you like this kind of setup? Do you like this kind of sessions? Would you be someone who watches something like this? Yes, I would, because जितने भी podcasting की episode different लोगों की मैंने देखी हैं, the real interesting thing is their own personal opinions, their own personal knowledge reflected through their talk, and this is what attracts people. You see, क्योंकि आप देखेंगे मीडिया में आप टॉक शोज देख रहे हैं सुबह शाम दोपहर को, और एक ही उनका फॉर्मेट है, और अब इतना वो अब मेरे जैसा बंदा जो 5-6 चैनल्स के टॉक शोज ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, आई कैन रियली टेल कि हर एंकर का हिडन एजेंडा क्या है बेसिकली, हु इज सपोर्टिंग, हु इज नॉट सपोर्टिंग. Right. They're probably yeah, it's become too obvious for me. I can in 2 minutes time I can really tell कि आज इसका क्या agenda है. So whenever you watch a show, a normal TV show, like a news show for example, तो आपको because since you're watching so many shows a lot of the time, तो आप decipher कर लेते हो एकदम कि अच्छा this is especially politicians जो हैं वो तो अपना party lines को obviously depict कर रहे होते हैं. Even जो freelance so-called defense analysts या normal political analysts या economists, they are also in a way more or less some are for or some are against type of a situation. ठीक है ना, और उनकी भी बाद में जब थोड़ा बहुत मैं dig out करता हूँ कि यार this man is saying this against the government, तो पता लगता है जी कि he has some connections with the other parties. Yeah, obviously, but so it's all kind of cooked up game. Well, they have a narrative that they want to put out, और वो हमेशा narrative एक किसी source से आ रहा हो. Absolutely. And it's becoming more evident the more you watch it, the more it becomes evident. So there's a dearth of talk shows जहाँ पे informally, without any hidden agendas, truly based on like one's own experiences, one own knowledge base जो उसने accumulate किया as a professional, whatever field. अभी ऐसे वो जब share करता है ना, तो that reflects कि यार something is different. He's talking from his heart. For example, he's not pushing anybody's agenda. अभी जैसे पाकिस्तान में मैं जिसकी पॉडकास्ट पाकिस्तान में देख रहा हूँ ना आजकल, वो है वो गंजी स्वैग वाला जो बंदा है, जुनील अकरम. I think he's brilliant. वो उसका you can see the genuine way in which he does his stuff and the kind of people he has, and you can see कि he's एक तो the first thing that I feel कि that guy is doing is कि he's pretty well informed about whatever he's talking about, और उसकी वजह से the general viewer, क्योंकि उसको पता है वो किसी एजेंडा के थ्रू नहीं आ रहा, वो किसी चीज को उस तरह से नहीं कर रहा, तो बट you just start listening to what he's saying and you start listening to other people on the show, और वो जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस भी चीज पे बात कर रहे हैं, it's just informative, it's just a nice way of getting information. It's internationally तो ये बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में it's starting to come in, और मुझे शौक था हमेशा से इस तरह की चीजों का, लेकिन I never knew कि मैं किस तरह से इस चीज को what platform do I use, like I don't want to be on TV more, like I wouldn't want to be on TV. I would probably want कि मेरी अपनी setting में how I want to conduct a show or like whatever, मतलब उसमें जो भी चीज़. देखो podcasting में मेरे ख्याल में it all the content, the quality of content, the genuineness of the content, and the person who is expressing has to have a background knowledge a little, have to have about whatever topic they're discussing, so that there's informed. Even you can, anybody can talk on general topic, because you know this is an age of communication. Everybody's जो भी educated आदमी है या audience है या whatever, वो आजकल they are pretty well informed on almost everything, right? So in this day and age, everybody has a huge knowledge base to tap upon. by the way हमने
कोई 4-5 मिनट पहले रैप अप करना था. हाँ, तो वो जो नॉलेज बेस है ना, अब उसको अब वो एकदम ऑफ कर लेंगे. तो वो जो नॉलेज बेस है ना, वन शुड शेयर, और मे बी you can come up with a difference. Maybe you can make some good points that can be picked up and can make a difference at a much larger scale, right? Yeah, अच्छा मैं सोचा था कि I should have different kinds of people on my podcast. From different industries, different backgrounds. They don't necessarily have to be celebrities. बिल्कुल. They should just be normal people with good knowledge of what they have. और मतलब मैं अपना तो चाहूँगा कि मेरी knowledge में इजाफा हो जब भी मैं किसी से बात करता हूँ. You always, because when you're having conversations with different kinds of people, you're always picking up on stuff that you never had an idea कि ये इस तरह से चीज़ थी या इस तरह. There's always, and obviously if somebody is watching it, they also share the same experience. मतलब it's good for them also. Right. So on that note, we're gonna wrap it up. एक सेकंड शायद तू बार-बार बात करना शुरू कर देता है. अभी से दस्ती जाता है बात. He's untrained assistant. अच्छा तो बस ठीक है. So we're gonna wrap it up. और next podcast में I feel के I don't know who I'm gonna get. Do you have any suggestions? किसको पकड़ूंगा? Well, you can start off with your own assistant. Sherry, budding artist. I'm gonna have a session with Sherry. He's launched his picture gallery and all that. Yeah, I should. And he's in an age group that, to me, one has to dig deep and see what these youngsters are playing around and what views they are having of the present. So that will be a great informative kind of a situation. Yeah. Chale, on that note, we're going to wrap it up. Everybody take care. See you in the next podcast.